আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। লিওর একটা ট্রেলার এসেছে অফিসিয়াল, যেটা তামিলে রয়েছে, তবুও দেখবো। হিন্দিতে এখন পর্যন্ত আসে নাই, তবে ফার্স্টেই দেখার চেষ্টা করছি। তো চলুন শুরু করা যাক, লেটস স্টার্ট। serial killer నడురోడ్లో నిన్ను కన్నుడి తరువాత জাস্ট 1 মিনিট, এই তো সাবটাইটেলটা অ্যাড করে দিয়েছি। ஏற்கனவே நிறைய பேர் தெருவில் செத்து கிடக்கணும் இஸ் நோட்டோரியஸ் பார்க்குற எல்லாரையும் சொல்றான். அப்போ ஒரு துணிச்சலான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சிங்கம் மாறி வந்து அந்த சீரியல் கில்லர் এখানকার যে সিনেমাটোগ্রাফি সেটা কিন্তু দারুণ লাগছে। জাস্ট আমরা পোস্টার যেমন দেখেছি সেই ধরনেরই কিছু একটা। তো আমি আরেকবার দেখতেছি। அப்போ ஒரு துணிச்சலான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சிங்கம் மாறி வந்து அந்த சீரியல் கில்லரை திருப்பி சொல்றாரு. போலீஸ் ஆஃபீஸர் கண்ணு ரீலோட் பண்றான். அந்த கேப்ல இப்போ அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரோட கன் உன் கையில and you have a clean shot. ও, সিজিআইটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে, ভিএফএক্সটা যে ইয়ার অ্যানিমেলের হাইনা। என்ன பண்ணுவேன்? அவன் இந்த ஊரை ஏமாத்தலாம், உலகத்தை ஏமாத்தலாம். এটা সঞ্জয় দত্ত, আই থিঙ্ক সঞ্জয় দত্ত। நிறுத்த போவதில்லை. ஈசல் கூட்டம் மாதிரி ஒன்று தேடி வந்துட்டு தான் இருக்க போறாங்க. நீங்க இருக்கக்கூடாது. நீங்க இருக்க உனக்கு தான் ஆபத்து. இனிமே நம்ம லைஃப் இப்படிதான் இருக்க போகுதுல பாத்தி. ஓடணும், ஒழியணும், பயந்து பயந்து சாவணும். আবারও বলছে, হাইনা যে সিজিআইটা সেটা কিন্তু যে করছে দারুণ করছে। அதுக்கு மேல உண்மை சொல்லணும்னா லீவு தான் உயிரோட சொல்லணும். দারুণ একটা ট্রেলার ছিল, প্রায় 2 মিনিট 43 সেকেন্ডে। সো অনেক কিছুই তো বলে দিয়েছে। তামিল হয় আমি কিছুটা হলে বুঝছি জিনিসটা এমন। সো এখানে তার পরিবারের কিছু দিক দেওয়া রয়েছে, এবং এখানে যে ভিলেনের যে ক্যারেক্টারটা সঞ্জয় দত্ত প্লে করছে সেটাও দারুণ। এবং এখানে আমি তো আবার বলছি সিজিআইটা খুব সুন্দর ছিল হাইনার। আর লাস্ট একটা জায়গায় আপনারা দেখছেন হয়তোবা, যে হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘুষিতে একটা করে ব্লাস্ট হচ্ছে। তো সেটা কিন্তু দারুণ দেখতে পাচ্ছেন। জাস্ট অসাধারণভাবে ট্রেলারটা বানানো হয়েছে। அந்த போலீஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸரோட ஆஃபீஸரோட கன் கன் உன் கையில and you have a clean shot. என்ன பண்ணுவேன்? আই থিঙ্ক এখানে হচ্ছে ওর পাস্টে, অর্থাৎ ইয়াং ভার্সনকেও দেখানো হবে। হিরোর ইয়াং ভার্সন প্লাস সামনে যে হচ্ছে এই প্রেজেন্ট যে ভার্সন, সেটা একটা কানেকশন দেখানো হচ্ছে, যে তার অতীতে কোনো একটা
নিশানা মিস হওয়ার জিনিসটাকে এখানে ভালোভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। இவனுங்க நிறுத்த போது ஈசன் குமாரி ஒரு தேடி வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இருக்கக்கூடாது, நீங்க இருக்கக்கூடாது. এবং হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মেকআপ কিন্তু দারুণ হয়েছে। তো সব মিলিয়ে একটা কথা বলতে চাই যে লিওর জন্য আমি তো অপেক্ষা করছি। এর আগে কাইথি দেখছি, লিওর বিক্রমটা আমার এখনো দেখা হয়নি। এটা দেখে নিয়ে লিওটাও দেখবো, কারণ আমার জানার মতে এটি সবগুলো একই ইউনিভার্সের, লকি ইউনিভার্সের মধ্যে পড়ছে। লকি ইউনিভার্স, লকের সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স। তো আশা করি আপনারা দেখবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সকলকে। যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। ধন্যবাদ।